हम HCFI, मैं आपका दोस्त और आज के इस कार्यक्रम का होस्ट कृष्ण चावला, नॉन स्टॉप 98 सेशन में सभी देखने सुनने वालों का, NGOs के मेंबर्स का, RWS का, मार्केट एसोसिएशन का, टेक्सटाइल मार्केट एसोसिएशन का, HCFI के मेंबर्स का और अपनी एक्सटेंडेड हेल्थ एजुकेटर फैमिली के साथ साथ अपने अतिथि जो विशेष रूप से हमसे जुड़ रहे हैं, उन सभी का आज के इस 98 सेशन में स्वागत कर रहा हूं। आप जानते हैं कि आज का ये सेशन इंटीग्रेटेड मेडिकल एंड इट्स बेनिफिट्स रहेगा और उस सेशन को लेंगे डॉक्टर आजम कबीर। आज क्योंकि आज के इस सेशन में डॉक्टर कालरा अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो उनकी अनुपस्थिति में मैं 2-4 मिनट आपसे बात करूंगा। आप सभी हेल्थ एजुकेटर्स इस बात से वाकिफ हैं कि डॉक्टर हमारे जो इस HCFI के संस्थापक थे, हमारे स्वास्थ्य गुरु डॉक्टर के अग्रवाल, इन दिनों को जब हमारे 2 अप्रैल के दिन से चैत्र नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, उसे विशेष रूप से मनाते थे और उन दिनों वो हर दुर्गा के रूप का वर्णन किया करते थे। मेरे में इतनी क्षमता तो नहीं कि मैं उनके अनुसार उस पर चर्चा कर सकूं, लेकिन मैं क्योंकि हर बार जब भी उनके साथ कार्यक्रम करता था तो अध्यात्म की बात करते थे, तो आइए थोड़ी सी चर्चा अध्यात्म पर करते हैं और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर आजम कबीर के साथ। हिंदू नववर्ष की इस विक्रमी संवत 2079 जो 2 अप्रैल को नवरात्र के साथ आरंभ हो रहा है, उसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आइए विचार करें, व्यक्ति क्या चाहता है? व्यक्ति चाहता है सुख, शांति, आनंद। सुख, शांति, आनंद प्राप्ति के 2 रास्ते बताए गए हैं, 2 उपाय बताए गए हैं। एक तो उत्तम आचरण करके भौतिक साधनों का सदुपयोग करना, दूसरा किसी बड़े व्यक्ति से, किसी बड़े राजा से, किसी अधिकारी से बातचीत करना। धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, मोटर गाड़ी आदि ये सब सुख शांति के साधन है, और वह भी तब जब व्यक्ति का आचरण ठीक हो। यदि व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है तो ये सुख के साधन भी सुख नहीं देते बल्कि दुख ही देते हैं। यह व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। ईश्वर ने वेदों में बताया है कि यदि आप मेरे न्याय, नियम, संविधान अर्थात वेदों के अनुकूल आचरण करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो मैं आपको आनंद, उत्साह, निर्भयता, सुख, शांति, धन, संपत्ति आदि से समृद्धि दूंगा और सब कुछ आपको प्राप्त होगा। उसी स्थिति में ये सब भौतिक पदार्थ भी आपको सुख देंगे। यदि आप मेरे संविधान, वेदों के विरुद्ध आचरण करेंगे तो मैं आपके मन में भय, शंका, लज्जा, चिंता, तनाव आदि उत्पन्न कर दूंगा। उस स्थिति में ये भोजन, वस्त्र, मकान, धन, सम्मान, सोना, चांदी, रुपया, पैसा आदि भौतिक पदार्थ भी आपको सुख नहीं देंगे, अर्थात दुख ही देंगे। इसलिए इन साधनों को इतनी प्रधानता न देवें, बल्कि ईश्वर के संविधान के अनुकूल उत्तम आचरण को प्रधानता दें। वो आगे कहते हैं, इसके अतिरिक्त जब आप किसी बड़े अधिकारी से बात करते हैं, तो कोई कलेक्टर से बात करते हैं, मुख्यमंत्री से बात करते हैं, प्रधानमंत्री से बात करते हैं, किसी उच्च अधिकारी से जब आप बात करते हैं तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। इस संसार का सबसे बड़ा उच्च अधिकारी ईश्वर है, वह तो पूरे ब्रह्मांड का राजा है, तो आपको उससे बात करने में अधिक आनंद मिलेगा बजाय बाहर के उच्च अधिकारियों से, प्रधानमंत्री से, VIP से, कलेक्टर से बात करने से जो प्राप्त होता है। आपकी वो ईश्वर सभी समस्याएं सुलझा देगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देगा, आपकी सब चिंताएं दूर कर देगा, बहुत ज्ञान देगा, विज्ञान देगा, आनंद देगा
जिससे आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन जिएंगे और आपका संसार में आना सफल हो जाएगा। शर्त केवल इतनी है, जो कुछ आप चाहते हैं उसकी पूर्ति के लिए आपको ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से पुरुषार्थ पूरा करना होगा। तभी ईश्वर आपकी समस्याएं भी दूर करेगा और आपकी सब उत्तम कामनाएं पूर्ण करेगा। अतः सुबह शाम एकांत में बैठकर ईश्वर के साथ थोड़ी बातचीत करें। अब हमारा कोई भी वेद हो, हमारा कोई भी ईश्वर, अल्लाह, क्राइस्ट, जो भी हो, वो सब कहते हैं कि वो आपके अंदर, आपके मन में, आपके हृदय में विराजमान है। तो इस कथा का सार ये है, तात्पर्य ये है कि आप एकांत में बैठें सुबह शाम जब भी समय मिले और अपने आप से बात करें। अपने दुख को, अपने सुख को लोगों के सामने रोने के बजाय बात करने के बजाय अपने आप से बांटें। अपने आप से चर्चा करें कि मुझसे कहाँ गलती हुई, मुझसे कहाँ चूक हुई, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। अगर इस प्रकार से हम अपनी गतिविधियों को खुद ही चर्चा करेंगे, खुद ही उन पर चिंतन करेंगे, चिंता के बजाय चिंतन कीजिए। जो गलती हुई है उसमें सुधार कीजिए। आप वापस नहीं जा सकते, आप उसको हिस्ट्री में जाकर ठीक नहीं कर सकते, उसे आगे ना दोहराने का प्रण करें। तभी आपकी सभी भौतिक कामनाएं भी पूर्ण होंगी और जो भौतिक सुख आपको मिले हैं, आपको वो रियल रूप में दुख नहीं बनेंगे, आपके लिए सुख बनेंगे। आपके लिए बोझ नहीं बनेंगे, परंतु आपको, आपके जीवन को गति देने के लिए, रफ्तार देने के लिए सुख का साधन बनेंगे। ये मेरा आज का जो वाक्य था डॉक्टर के अग्रवाल को उनकी याद में और इस नवरात्र के इस अवसर पर जब वो हमारे बीच होते थे, चर्चा करते थे, उन्हीं को समर्पित है। तो आइए आज का हम सेशन आगे बढ़ाएंगे और आज के सेशन को हमारे साथ लेने के लिए जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर आजम कबीर। डॉक्टर कबीर आयुर्वेदिक फिजिशियन हैं। इन्होंने अपनी बैचलर्स इन BA MS फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड रिसर्च बेंगलोर से किया है। ये एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, प्रेशरिस्ट हैं, स्पेशलाइजेज इन ऑल काइंड ऑफ अदर सिस्टमिक डिसऑर्डर्स। और आज ये अपनी बात हमारे बीच रखेंगे। आइए इनकी बात को सुने। और आज हर बीमारी के कई इलाज हैं, कई तरीके से आप इलाज करते हैं। तो डॉक्टर आजम आज हमारे साथ शेयर करेंगे कि किस किस प्रणाली से किस किस तकलीफ का इलाज किया जा सकता है और उसका क्या क्या लाभ रहता है। डॉक्टर आजम कबीर HCFI से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। हालांकि हेल्थ एजुकेटर्स के कार्यक्रम में वो हमारे साथ पहली दफा जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर आजम कबीर और आई हैंड इट ओवर टू यू। वेलकम टू द शो। प्लीज टेक द सेशन नाउ फॉरवर्ड। Thank you very much, sir. It's a great honor to work with you and explain my knowledge. So, मैं अभी अपनी खुद की एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. Just to start with the session, the whole topic is all about integrated medicine and its benefits. So today, at this right moment, a lot of patients are suffering from different diseases. They're running towards the same doctors again and again. Whereas in integrated medicine, we have 2-3 other types of medicines getting together, solving the problem. So to just get to a brief, integrated medicine का पूरा एक brief detail क्या होता है. So integrated medicine is a form where 2 or 3 other different forms of medicine join together, diagnose the problem, and then start solving a part of it from their side. In the sense, समझ लीजिए अभी मैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन इस चीज की बात कर रहा हूँ, जैसे अपना ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मेडिसिन ऑफ इंडिया है, जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है, योगा है, फिर चाइनीज मेडिसिन भी ऐड कर रहे हैं आजकल, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर. सो ये सब, इन चीजों का इंटीग्रेशन के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ कि हाउ to integrate all this Ayush department and the Chinese medicine together, that is acupuncture and acupressure, to better solve a lot of problems and diseases in the country. So as explaining about myself, my father, my grandfather, all are doctors. My father is an MBBS doctor, my grandfather is a Unani doctor, and I have done my Ayurvedic doctor. तो अपने घर पे ही हो गया, एक integrated form of medicine हो गया था. तो इस चीज को मैं अपने दोस्तों को explain कर रहा था when I was in my internship.
So I started explaining to my friends कि see, my grandfather treats my patients, his patients in Unani. मैं अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन उसमें ऐड कर देता हूँ, तो रिजल्ट थोड़ा जल्दी आता है एंड रिजल्ट अच्छा हो जाता है. So the same thing we started doing when we were in our internships in a government hospital. तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ के पेशेंट्स के पास जाके उनकी हिस्ट्री लेते थे, एंड वॉट एवर द डॉक्टर यूज टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन दे यूज टू टेक, बट वी यूज टू डू अ फॉलो अप चेक ऑन दीज पेशेंट्स के उनका रिकवरी कैसे हो रहा है और उनको और हेल्प कैसे कर सकते हैं. तो मैं अपने मेरे दोस्तों में से एक होम्योपैथी था, एक आयुर्वेदिक था जो मैं हूँ, एक नेचुरोपैथ था और एक योगा योगा प्रैक्टिशनर था और एक एक्यूपंक्चरिस्ट भी थे. तो हम लोग चारों मिलके क्या करते थे, एक पेशेंट को लेके उनकी हिस्ट्री निकाल के, एंड वी यूज्ड टू स्टार्ट गिविंग आवर ओन आइडियाज विद आवरसेल्व्स. वी यूज्ड टू थिंक मैं इसको ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ, मैं उसका ई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मैं उसको ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ. एंड देन धीरे धीरे करके हम लोग एक दो पेशेंट्स को एक्वायर करना शुरू किया, एंड देन वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग देम हाउ वी विल एक्ट ऑन द ट्रीटमेंट. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर दैट we start getting more response from the patients के आपकी medicines काम कर रहे हैं, because I think naturopathy, Ayurveda and homeopathy basically has the same kind of background. Like we all consider Pancha Mahabhut as the basic fundamentals. We have all Vata, Pitta, Kapha, the 3 types of body types. तो इसमें हम लोगों को एक प्रॉब्लम समझने में इतनी तकलीफ नहीं होती थी. So we used to easily catch hold of the disease and try to treat it with the different medicines. So the main point of me explaining this right now is there are a lot of centers in Bangalore and other states and India also where they form holistic treatment, जहाँ पे आयुर्वेदा भी है, यूनानी भी है, नेचुरोपैथ भी है, योगा भी है. लेकिन आज के ज़माने में right now after the COVID pandemic has happened, lot of them have started to realize that holistic treatment is a big firm and इस treatment से बहुत सारे लोगों का फायदा होने वाला है. So just to give an example, lot of them had suffered a lot in COVID, and then there were a lot of uses of steroids and other medicines which had to be done during the time. तो उसके बाद में जो complications हुए, the post COVID effects हुए, तो उसके patients हमारे पास बहुत आने लगे. तो हम लोग ने थोड़ा डेटा क्रिएट मतलब जनरेट किया, एंड देन वी स्टार्ट फॉलोइंग अप ऑन पेशेंट्स जो अपने पास जो ऑलरेडी अच्छे हैं, और बस वी वर जस्ट चेकिंग देयर हेल्थ कंडीशन से कैसे हैं, क्या हो रहा है, व्हाट आर द कंडीशंस, हाउ आर देयर ब्लड शुगर लेवल्स. सो द बेसिक थिंग वी फाउंड आउट दैट देयर ब्लड शुगर लेवल्स वर स्पाइकिंग अप टू हाई, द हार्ट रेट्स वर इंक्रीजिंग मोर देन नॉर्मल. तो वी स्टार्टेड गिविंग देम योगा फ्री कंसल्टेशंस एज अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट के आप आइए हमारे पास, बस just take a consultation, try this new thing out. तो अपने हम लोगों को मार्केटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था. Then we understood that people are right now considering this holistic treatment as a good base. अभी उसका बढ़ाव हो रहा है, but not a lot of people know about this, but not a lot of people believe that all these 5 treatments can join together, collab together and then treat a person, and they believe that इसको साथ में लेंगे या फिर उसको साथ में लेंगे तो side effects हो जाएंगे, कि हाँ definitely हो जाएंगे, but to diagnose a condition with what form of medicine, and then giving that form of medicine to that patient, making sure he doesn't have any side effects, that is the whole point of integrated medicine right now. This was the idea of my grandfather to make an integrated clinic where I can practice Ayurveda, he can do his Unani, and then acupuncture, acupressure. In the sense, we were all हम लोग ये already कर रहे थे. For example, musculoskeletal disorders में we were all doing a lot of spondylitis and then nerve compressions. And you will ask me, इसमें system में क्या करेंगे? What will you give internal medicines? Apart from painkillers and other therapies, there was no other option. But as we started getting acupuncture into the firm, like acupuncture से हम लोग ने बहुत सारा miraculous treatments किया है. Especially we have saved a lot of people from getting themselves surgery, मतलब surgery होने से बचाया है हम लोगों ने. For example, cervical spondylitis हो गया, तो उसमें तो कोई option है ही नहीं. They go to the doctor, they have to get it removed. They have to remove the bulge out of it. They have to push the bone back. So my grandfather came up with acupuncture, and then we started doing panchakarma from Ayurveda to make sure to balance the pain and to get rid of the degenerative conditions. Ayurveda क्या करता था, वहाँ पे degenerative state को रोक देता था. It used to stop the degenerative condition, and acupuncture क्या करता था, वहाँ पे pain reduce करता था. So we used to use acupuncture as a pain relief and Ayurveda as a cure. And
after that, by God's grace, हम लोगों ने बहुत सारा success देखा, and then lot of patients started following things. Lot of patients started accepting के दो मेडिसिन को हम लोग ट्रीट करके करने से ज्यादा फायदा है जब जाके बस एक ही चीज को फॉलो करने से अच्छा. या at times we have to follow allopathy medicines because the emergency में और कुछ काम नहीं आता है सिवाय allopathy medicines के. So the whole point is that allopathy, यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथ, acupuncture, इन सब को कोलैब करके परफॉर्म करने से there is a lot of benefit for people, and they have to start accepting the fact कि एक ही चीज को फॉलो करेंगे तो it is not going to last long. Another thing I wanted to tell was we are trying to make few testimonies of people how they have recovered, and so I couldn't get those testimonies in this session, but I most probably in the future sessions when I'm doing, I will get the video testimonies of the patients how they've recovered and what treatments they have done from our state and from other colleges in Bangalore. And another thing I wanted to share was when collaborating these medicines, people also have a doubt that when you collab two medicines, there will be reactions. We are not, the whole point of this is to not collab two medicines, but to follow the right treatment. People, हमने देखा है कि होम्योपैथी में बहुत सारे PCOD disorders के recovery बहुत अच्छी है, उनकी treatment बहुत अच्छी है. So what we do, we guide those patients to follow the homeopathy medicines. कि आप इनके पास जाइए, this is the best thing for you to treat. And then for example arthritis hai, and then you have gout, and then all these treatments are very good in Ayurveda in the sense आपको results कुछ 10-15 days में आपको results मिल जाएंगे, आपका uric acid level कम हो जाएगा, your gout pain will all come down. So the whole point is that we have to shorten the period of the suffering and increase the longevity of the patient. So we will just be guiding the patient into the right stream where there is easy recovery and cure. This is the whole motto of a integrated form of medicine. See, anyone who is an Ayurvedic practitioner should be open to such ideas, because ultimately is the patient को ही ठीक होना है. Ultimately अपना goal क्या है डॉक्टर होने के नाते, we have to make sure the patient who's coming to us should go happily without pain. That is the whole goal of a doctor. So I just want to convey this message that we should be a little open to the other systems as well. Sir, do you want to tell something? No, it's okay. You want to share your slides, please? Yeah, I just have the slide. Yes, you are a co-host. You can open your presentation and then share it. You can do that. So I couldn't make a slide of my own, so I found few slides where I can explain you how the things about integrated medicines. So here we have the complete holistic belief, like how how to promote, preserve, prevent diseases, and then यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, तो गिव ट्रीटमेंट, ऑप्शनल ट्रीटमेंट, ऑप्शंस रहने चाहिए ट्रीटमेंट में कि पेशेंट को ये कभी-कभी क्या होता है, पैलेटेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी पेशेंट आ नहीं सकते ट्रीटमेंट के लिए, या फिर पेशेंट बहुत दूर हैं अपने से, तो we will find out a way, उनके क्योर के लिए we will have to find out a way. So that in that form this our integrated medicine helps a lot. For example, Ayurvedic treatment ke liye they have to come to the center, or they need a setup where panchakarma to be performed. When that cannot help, then we shifted off to homeopathy medicine, jahan pe at least unko medicines khane ke baad uska relief mile. So according to the place, location, the patient's flexibility and their traveling, we will have to find out which medicine is more helpful for them. And also coming down to holistic understanding of healing. This is very important. Normally visible, the true healing of a holistic nature is in our body itself. Our body has the capacity to heal its own self. Only thing is that we'll have to guide it through. In that way, the natural form is more powerful. It gives our body its own time to heal and then recover slowly as time prolongs. Yep, here it is there. Nature of healing of spirit.
So एक mind हो गया, एक body हो गया, and spirit. For a person to be healthy, all mind, body, and a soul should be healthy, or else the person is not healthy. For example, this is a basic thing कि योगा क्यों करते हैं, कि अपना माइंड शांत रहे. अगर अपना माइंड शांत रहेगा तो अपनी बीपी कंट्रोल में रहेगी, ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहेगा, स्ट्रेस लेवल कम रहेगा. राइट नाउ इन दिस सिचुएशन बहुत सारे लोगों को सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आधी बीमारियां हो, बस उनको उनको अपने अपनी स्ट्रेस निकालना है बाहर. दे हैव टू जस्ट रिमूव द स्ट्रेस आउट. तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए वी बिलीव दैट collaborating things is way much better for us to understand the person's problems. So your body normal, visible in nature, उसके बाद में requires basic needs, जैसे effort हो गया, अपना exercise हो गया, diet हो गया, food, nutrition हो गया. All this comes under their body nutrition, body wellness. And then coming down to mind, then yoga, practicing meditation, and then making sure your surroundings are fine, not quarreling, fighting around. So ये सब चीज avoid तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इसको रोक सकते हैं by adapting to new form of treatments, by adapting to new form of lifestyle. Here it is, sir. This is how we explain this. Like first spirit, and then mind, and then body. The spirit is the core. Spirit is a core of our health, and then comes our mind, and then comes our body. The body is the most external part, like the whole covering of it. So once if your spirit is affected, then it affects your mind, and then affects your body. So पहले उसको treat करने के लिए we'll have to go to the root cause of the patient. So understanding this, we will have to find out whatever the resources are required, whatever the resources are needed, and then go to the root cause and then cure. This will give a long lasting cure for the patient rather than just a temporary cure. So treating the main root cause is the whole idea of integrating medicines into the same field. And I wanted to exchange this one also. Yeah, a state of balance and imbalance. How balance and imbalance plays a major role in our lifestyle. Abhi, you can take your bowel systems. So if your bowels are not cured, they say, I had read a book suggested from one of my mentors called as Stomach as a Second Brain. So which was beautifully explained that how our stomach can affect our moods, how our stomach can affect our behavior towards others, how our stomach can affect our lifestyle. So which says there is a requirement of balance in both. अगर constipation है तब भी problem है, तब loose motion है तब भी problem है. To have a balance in a life is very important. Like the same way we consider Vata, Pitta, Kapha in Ayurveda. अगर इनका इन त्रिदोषों का अगर balance ना रहे तो एक विशिएट हो जाता है, ये कम हो जाता है, एक ज्यादा हो जाता है, and then according to those vitiation there are different diseases forming. So having a balance in the mind, soul and body is very very essential to get our lives healthier day by day. Yeah, here it comes. So what are the reasons? Why do you think people get ill? Why do you think our immune people our immune system is very poor? No, I don't eat enough. I don't sleep enough. So all this are reasons. Like just start from the first thing. Like poor lifestyle. अपने आप को आप क्लीन नहीं रख रहे हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हैं, आप काम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आप खा नहीं रहे हैं ढंग से. So all this other are like the basic things which will increase your tendency to fall sick and fall ill. And then comes stress. Stress right now though is the biggest cause, I can tell you, because I have patients coming to me with reports which are perfectly normal, or there is no problem in their reports, but still they have pains, they have headaches, they have migraine, they have n number of issues. And then the final product which we try to diagnose is stress. And then stress is such huge in these days. Itna zyada ho raha hai stress na abhi, because of the lockdown and pandemic, and then and I would also suggest the financial crisis people are going through. That to get stress out of the body is the biggest challenge for doctors right now. क्योंकि इसका कोई इलाज है ही नहीं. They have to adapt to yoga. They have to adapt to breathing exercise. They have to adapt to
like working out, like kuch bhi apart from medicines. Like, yeah, people who are overstressed or have anxiety disorders, they are given medications and they're fallen down, but uska alag hai. Neuro ka completely alag section aa jata hai when it comes to stress. But yes, stress plays a very big role in falling sick. And poor eating habits, yes, this is 100%. This is the most, I mean, biggest problem right now in teenagers and all youngsters who are sitting at home, working from home, do not have a active life. So it's difficult for them to cook healthy food or find healthy food and eat. But making this a small habit, like just taking out one thing, like going out for one thing, like apne diet se shakkar hata dijiye, remove of white sugar from your diet, or switch your sugar towards jaggery. Why they tell, they see both jaggery and sugar are same sucrose, they have glucose in them. But why, if you will take 2 spoons of sugar, if you take 2 spoons of jaggery, you will not like the taste. So you'll at least cut it down to 1 spoon. That is the whole point of shifting from sugar to jaggery, but doesn't make a lot of difference. Like taking these small things off your food, taking off junk for a month, or having a fast junk fast for a week, will make a lot of difference. You people, all of us will start seeing our healthy well-being will start happening in the people right now. And then poor work environment. As I said, work from home is the biggest issue right now. घर पे बैठेंगे 8 8 घंटे 10 10 घंटे काम पे रहेंगे, and then they have no other work, they just go sleep. What will happen? Obesity will increase. Obesity से diabetes होगा, diabetes से hypertension, and then it just keeps building. Right now, I've just read an article which a few days back where an IT professional or a director of some company just said that we are investing so much in work that we have forgotten that it has to be paid by our health. We are paying the company or the person with our health rather than they paying us the money. Like they definitely have the money, but what will you do with the money unless you don't have the health? How much ever you spend, your health is not going to come back. So please make sure you take some time out for a small activity, do a little cardiovascular exercise, get your heart rate high, do a little bit at least, so that you make yourself healthy once as this pandemic ends. And then I hope अभी तो बहुत सारे offices खुल गए हैं, so I hope people start using the gyms and the parks and start jogging and making their health lives better. Emotional balance, sleep disorders, lack of rest. Again, lack of rest will again come back to your working environment. Lack of exercise, and I have explained about the working environment, how it comes. Sleep disorders, obviously, they have night shifts, day shifts. It is basic that if you work for like 18 hours, you will not be able to sleep because your body is tired, but your mind is not. That is a different. A lot of people come to me telling that उनका सर हमको नींद आ रही है लेकिन हम सो नहीं पा रहे, या फिर हमारी बॉडी थक गई है लेकिन हमको नींद नहीं आ रही. That means there's so much of active state of mind happening that your body wants to rest but your mind does not want. So this disconnection between body and mind is a huge problem. So what we do here in Ayurveda, yoga, and all that, we give them hot water bath. We tell them to take a hot water bath, cool down, or start doing a breathing exercise where they can feel each and every muscle, each and every part of the body. So we just want them to imagine things. Okay? Just make sure when you take a deep breath and you breathe out, you should feel the whole lungs swelling up. So it's just a state of mind that has to build so that your mind relaxes. That you can definitely talk to your doctors and then ask them different kinds of breathing, and then you can start doing that. My work right now is to make awareness about how holistic treatments will affect your lifestyle, will change your lifestyle. The whole point is to accept these holistic treatments as one, and then utilize this treatment to better your lifestyle. Yeah, obviously you will have to follow the allopathy medicine. It's not like I'm going to stop them to take the allopathy medicine, nothing like that. But I'm just telling you the importance of this in our lifestyle, how better it can be. Yeah, wrong posture. So our last session in the same I had done about wrong posture, how bad it is, and most of our musculoskeletal disorders, which I specialize in, basically are because of wrong postures. People sit in a wrong way. They sleep somehow. They don't give importance to a posture.
because which plays a very important role. People slowly with the wrong posture in a long period of time start developing conditions like spondylitis, which they would have never ever experienced. I've had patients जहाँ पे patients बोलते हैं कि सर हम कहीं गिरे नहीं, हमको कोई चोट नहीं लगी, हमारे से कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, लेकिन फिर को हमको स्पॉन्डिलाइसिस कैसे हो गया. तो the first thing I ask is what is your work? आप क्या करते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आप चेयर कौन सी यूज करते हैं. So just by sitting in a wrong posture on a computer with your head down is so dangerous that every degree when you go down, when you put your head down, you put 30 kgs of weight over your neck. And neck is a very individual part, like it has no other supporting apart from the digastric triangle muscles in the neck. So every angle you go down, you put 5 kgs of weight on the neck, which produces a compression in your cervical, which leads to a spondylitis. So these are small basic things which given importance to can make a lot of difference in life. अभी आ रहे हैं the poor interruption. हाँ, this is there definitely. Relationship problems तो बहुत हैं, environmental pollution भी बहुत हो रहे हैं, इसके बारे में भी बहुत सारे awarenesses हो रहे हैं अभी. When compared to other states, I would suggest our state, Karnataka and Bangalore is much better. But yes, there's a lot of greenery is cutting down. In fact, resources for Ayurvedic medicines have also been lost. जो medicines हमको पहले आराम से मिल जाती थी, आज वो मिल नहीं रही है, because there's no plantation, there's no medical Ayurvedic plantations हो नहीं रहे हैं. So we try to import things from Western Ghats and other things. So that we should start growing things instead of growing the show flower plants or this just plants which have no medicinal values. You should start growing one medicinal plant in your garden. Example, आपका गिलोय हो गया, which is called as our Amrutavalli बोलते हैं उसको, which plays a very important role in boosting our immunity. And you can grow haldi, adrak, pudina, all these things which you can use in your regular farmhouse. Kitchen, you should start growing them. Then once you start growing them, you will start knowing the benefits of them. For example, giloy. People never knew what giloy was like long time ago. Now every house has a giloy plant. Every house has a haldi plant because they know how important it is. So this is the revolution, or this is the change which has to continue. And now coming down to the process of healing in an individual. Yes, accepting there is a problem. This is the biggest problem in patients right now. So people think I have no pain. So for example, I have no pain in my stomach, but sometimes there is a pain, or they don't get it checked. They just try to do some home remedies, या फिर try to do something by their own knowledge, or YouTube में एक बार देख लिया, या फिर gas हो गई. But ignoring these small things may lead to a huge problem that they don't understand, and they don't accept the fact कि आपको तकलीफ है, आप दवाई खाइए, आप ठीक हो जाएंगे, ये नहीं समझेंगे. So accepting the problem is the first step to treat, or first step to get rid of the issues. I mean, first step for the success towards a treatment. And identifying or getting help to identify it, yes, you have to go to a doctor. You have to identify the problem. Give importance to the things the body is trying to tell you, and always listen to the body. See, when you think about yourself that you're already all right, though you are suffering from pain, you're cheating the body. You're not listening to what it is trying to tell. If you are having continuous pain in the leg and you still go to the workout, you still try to work out in that pain, and then you think, no, doing that is strengthening my leg, but that's wrong. आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, योगा करते समय ओवर स्ट्रेच कर देते हैं, या फिर कुछ नया आसन ट्राई करने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ हो जाता है, एंड देन कमर मसल पुल हो जाता है, या फिर मसल टेयर हो जाता है. सो ऑल दिस इज वेरी important. Okay, you have to listen to your body. If you can't do it, no problem, give a break, do the basics again, try to do it again slowly, that you will reach to a point once at least. But having a competition with yourself is bad. Do not overdo things which will damage you. And then yes, believing in the process is very important. I can't tell anything because Ayurveda is all about belief. You have to trust the treatment. You have to trust the holistic treatment.
to come to us and then get it treated. But yes, people who have trusted have definitely got results. But I have seen people who just come in a double mind, and they don't have the patience to get it treated, and then they just waste time. मतलब वो अपना हमारा time waste हो गया, उनका time it waste हो गया, and then they have a bad impression over it. So that shouldn't be there. You should have belief when you're coming to the treatment for a treatment, or you should build that belief slowly. And yeah, how does this whole holistic treatments and the whole integrated form of medicines will treat the improving the functions of the body, preventing illness, then preventing illness. Sir, am I audible? ब्रेक हो रही थोड़ी आवाज आपकी, पर वैसे ठीक है, ब्रेक हो रही भी. Now it's fine. Yes. Yeah. So effective exercise. So we take all these criteria into action. For us, all these things are important, like releasing the toxins are important, cleaning environment is important, improving the functions, preventing of illness, effect of exercises. How we will explain this to every patient, like how is this going to make a change in your body? The boon of rest. What happens? People tell rest is not required. They keep working out 7 days a week. That's bad. Giving a day rest is where you're giving your body a time to recover from all these injuries you've done. Management of diet. People either diet too much or do not diet at all. They don't have the balance in between. या फिर क्या करेंगे, अभी मेरे को weight loss करना है, 15 दिन का क्रैश कोर्स करेंगे, लिक्विड डाइट पे जाएंगे, सब वेट लॉस हो जाएगा. बाद में क्या? How are you going to maintain that weight? For example, a person got down from 80 kgs to 75 kgs within 3 weeks, for example, with just liquid diet. Yes, it is possible. You can come down. But how long are you going to hold that 75 kgs? The moment you change the diet from a liquid diet to a solid diet, gone. You will hit the sky again. Who knows? You might reach 90 also. So having good knowledge of a diet and accepting that diet and making that diet as a lifestyle is how you can achieve your goals in terms of weight loss. Control over lifestyle. Yes. Now coming down to drinking and other habits, like I've seen a lot of people who have that control over their habits and then still trying to manage them too. That's fine, but losing control over it is definitely you're abusing yourself. Awareness of abuse, like, okay, why this awareness of abuse is written here? I'll tell you a reason. People have this habit of applying balms or these Nilgiris or this camphor balms to their head because of the pain. Like, for example, migraine people I've seen, I have a patient who keeps applying balms for his head, feeling that he feels that it gives him relief. But in fact, every time, for the first time, he applied a little bit. Second time, he wants a little more. Third time, he wants a little more. So this want of having little more is where abusive medicines come in. After that, you go to a doctor, it tells, yes, this is because of abuse of menthol. You have been abusing menthol so much that आपको menthol से कोई फर्क नहीं पड़ता. So just using balms so much is also abusive. So we need to know how to stop, where to stop, and what to do, or where to change the medicine. If this is not working, or this is becoming abusive, then what to change. So it is good when 4-5 fields of doctors sit together and talk. We will have different ideas and we will have different approach towards a treatment, and definitely it will work when we all work together. This is about how I've written how to heal mind. What are the things? How do you heal the mind, body, and soul? So beauty of breathing. How breathing helps in improving our mind. How our lifestyle can be changed. How our chakras, the Shat chakras, which we explain in Ayurveda, how that gets activated, our thinking capacity improves. So there was one. My mentor also explained me about how breathing from nose helps. What side of your brain is creative? What side of a brain is a positive brain? And then how to breathe through different noses and different nostrils, and then how breathing from different nostrils makes a difference in your thinking. So it's very beautiful when you start doing it by yourself, is where you start experiencing it, and you become your own testimony when you start doing it. So first initiative is very important.
Yeah. So integrated medicine. Yes, the traditional medicinal system where our Ayurveda, homeopathy, naturopathy, Siddha, Unani, and Tibetan medicine come under action. Then complementary therapies like yoga, acupuncture, reflexology, etc. Yeah. Yoga has definitely helped a lot. People have had a lot of experience in yoga right now. अभी तो बहुत popular हो गया है. Every other house, people are trying to do yoga. People are definitely going towards reflexology. The release they get, the kind of relief they get after reflexology is great. I have had people convert. I mean, not telling converted, but I've had people believe in these medicines in my clinic and my father that all these medicines are helpful. So we used to do this free sessions like up I was experience, like it's called as an experience session, where they come, they get experience about acupuncture, how it is. Sometimes people are scared about needles. So क्या होता है acupuncture में आपको दिखाता हूँ मैं. यहाँ पे we use needles. Like everyone who knows how acupuncture is done. Yes, yeah. We use specific needles, and then ऐसे needles का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि it will pain or it's very gross or it's very scary. But after we tell them कि एक बार आप try करिए and how you let us know how you feel. So after they say after 1 or 2 sessions, they feel such a difference, such a change in their pain, I would tell, or in their condition, that they want to come back again once in a week just for a regular health checkup. जैसे हम लोग जाके ब्लड टेस्ट करते हैं कि आप रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ऐसे ही दे कम फॉर क्लिनिक जस्ट फॉर अ रेगुलर हेल्थ चेकअप के सर वी जस्ट वांट टू get a rejuvenation session done. So this is slowly progressing towards success now. Slowly people are getting aware about how beautiful acupuncture is and how beautiful yoga is getting. Now coming back to Ayurveda and Panchakarma. So yes, I was telling about this treatment. Like it is a very, I mean, I myself, I wanted to get into my BBS field, but as I saw my father treating patients, and their recovery is very good. So I was inspired by Ayurvedic treatments, and I was inspired by the treatment they used to give at my home. So I chose this, and I am pursuing this proudly, that I'm an Ayurvedic physician. I'm able to treat patients without side effects and give them relief. So we have been treating arthritis and chronic diseases and neurological diseases very efficiently with our own formulation. We try to make our own medicines at our clinic and make sure there is no adulterations happening. That is the reason I was telling that right now it's very difficult to find medicines which are available naturally. क्योंकि environmental pollution तो इतना हो रहा है, झाड़ वाड़ बहुत कट रहे हैं. There's a lot of loss happening for us as well. And then coming back to Panchakarma. Panchakarma is like the five therapies in one, where we have Abhyanga, where we have Vamana, Virechana, the detoxification of the body, and we try to cleanse the body first. So why we believe Panchakarma is important? Because unless and until a vessel is not clean, you can't put anything inside. Like for example, if a plate is not clean, you will not put food inside and eat. So the whole process of Panchakarma is to clean that plate up. The plate, in the sense I'm referring it to our body. So there are a lot of toxins just in the air. Forget about food, but अपने माहौल में, अपने हवा में इतना pollution है, प्रदूषण हो रहा है कि it is very important for us to cleanse our bodies once a year at least. So we have this process like Panchakarma for once a year. हम लोग Vamana, Virechana करवाते हैं, Dhumapana करवाते हैं to cleanse our body, and then we introduce our internal medicine. So what happens? It's so fresh, a body becomes so clean that any medicine you put inside, it gives immediate release, immediate action of that medicine is shown. That is why we believe that Panchakarma is very essential in including in the Ayurvedic treatments as well. In coming down to homeopathy, I mean, I can tell it this has been a very miraculous treatment, but I have seen my mom being treated very quickly for PCODs and other treatments. But yes, I have friends. I mean, I am not that good at homeopathy, but I have friends who've been practicing with me in my clinic about treating patients, which I think was little difficult for me to treat. They have got it very easily. They were able to treat that patient very easily. So this is where it happens. For example, I find it difficult to treat,
I tell it my patient says, boss, I'm not able to treat this. Please try and follow it up. And he finds a solution for it. So the ultimate goal for us is to make sure the patient goes happily with one effective treatment and less side effects for him. And naturopathy, coming back, naturopathy is all about your naturopathy and acupuncture are collabed right now. Our Ayush department has done that, so where people in our naturopathy learn acupuncture both classical way and uh, the clinical way. Here I have friends, I mean हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे naturopathy में, they concentrate a lot on diet. I have seen my friends doing a lot of miraculous treatment just with diet, like just for, again from taking PCOD till other lifestyle disorders like diabetes. They get that parameters into such good control that we were all shocked. So diet and naturopathy is working amazing right now with these therapies as well. And yes, Unani is again, I would say Unani and Ayurveda do not have a lot of difference. So where they use the same kind of medicines, but it doesn't have any therapies like Panchakarma. But yes, the medicines which they use are quite palatable and do not have any and do not cause any much of a palating issue. But yes, they use the same kind of ingredients what Ayurvedic physicians use and what Ayurveda use. They have the same kind of belief also with Panchamahabhuta and Tridoshas and Saptadhatus. The Saptadhatus in the sense your muscle, bones. Panchamahabhuta is air, water, fire, and earth. So they all have the same kind of belief. Like इनका treatment जैसे हलवे ज़्यादा बनाते हैं, मतलब जैसे sweet. Their medicines are sweet. So people who are diabetic, this would not be a very good suggestion for them. But apart from that, they have a lot of medicines for reproductive disorders like erectile dysfunction है, या फिर low testosterone है, या फिर ओजोस्पर्मिया है, या PCOD है, या फिर excessive bleeding है. So they have a lot of good treatments and good medicines in Unani as well. So as my grandfather was Unani doctor, so I have seen him giving his medicines, and he used to ask me, he used to take my suggestion, okay, is there anything that you can improvise? Is there anything you want to add into my treatment? So I used to suggest that there is one few medicines which will overcome the factors that Unani is not able to cover, that I can cover with Ayurveda. So this is how it works, integrated form of medicine. And coming back to Siddha, Siddha is also like like related to Ayurveda as well, which has uses of minerals and other but yeah, people have a misconception that using minerals they use a lot of minerals in Ayurvedic medicines, and it causes kidney failures. But there is a saying in Ayurveda that usage of poison also in a proper quantity or an exact quantity can cure diseases. So you should have good knowledge and the skill to use these medicines only to cure. For example, you can take minerals as Ayurvedic steroids. I mean, I'm just trying to compare it, but Ayurvedic steroids where it will enhance the property, but yes, there is a little bit of side effect. So you need to overcome that with different medicines. हम उसको cover कर देंगे दूसरे medicines and still be able to cure treatment and diseases. Tibetan medicine, which is also very famous in our south, where there's a Tibetan university in Coorg, where they have their own form of medicines. So they grow their own medicines, which are very good for arthritis, ulcers, chronic digestive problems, asthma. I've seen miracles happening in these treatments as well, which I give importance to, because ultimately my goal is the patient should just be happy and go home without any problems. And coming back to Chinese medicines, yes, here this is a complete like treatment. Like how we have Ayurveda, they also believe in 5 element theory. They have something as yin and yang, which we believe in balance. दोनों का balance होना बहुत जरूरी है, yin and yang का, जिसकी वजह से अपनी body में क्या बोलते हैं, equilibrium maintain होता है. And they come up with acupuncture as a huge treatment, where I have been treating migraine and sinusitis, stress, insomnia very effectively with few points of acupuncture, not much, but
इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट मैंने और कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट में नहीं देखा, इवन आयुर्वेदा में भी नहीं देखा। हाँ, शिरोधारा है। सो व्हाट आई डू, आई टेक आयुर्वेदा से शिरोधारा लेता हूँ और एक्यूपंक्चर से नीडलिंग लेता हूँ, एंड दोनों को साथ में करता हूँ इन एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म, जिसकी वजह से पेशेंट का रिकवरी टाइम 1 हफ्ते से लेके 3 दिन में हो जाता है। सो इट्स वेरी फास्ट, द ट्रीटमेंट इज सो फास्ट दैट there's no waiting. Actually, the patient will start seeing results quickly. Now coming down to yoga, yes, everyone knows that yoga is it should become a lifestyle rather than just doing it occasionally. Meditation, relaxing techniques, and then pranayam. You have kriyas. A lot of people are getting into surya kriyas and then chandra kriyas and different kinds of kriyas, which are appreciable right now. लेकिन क्या हो रहा है, people are getting into overdoing of things as well. So you need to follow a master. You need to get advice from people कि आपके बॉडी के लिए कौन सा आसन ठीक है, आपके इस ट्रीटमेंट के लिए कौन सा आसन इफेक्टिव है. देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस. जब आप एक डॉक्टर से पूछते हैं कि मुझे आर्थराइटिस है और मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथी से, और इसके साथ मेरे लिए कोई ऐसा आसन आप बताइए जिसकी वजह से ये आर्थराइटिक पेन कम हो जाए. So when you try to collab, there are different yogas and asanas for different conditions as well. So when you start using that wisely, there is immense scope for it. आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा मतलब you will feel कि चमत्कार हो गया. So that is how I want to bring the importance of these medicines and these treatments into a lifestyle where you can utilize it in the right way rather than doing everything together. Doing few things of everything a little bit will be more effective. So this is all I would like to share about my slides, sir. If we have questions, please you may raise your hand, or those who want to ask questions. Keshav ji, any questions? Okay. Keshav ji, can you hear me? ठीक है. Dr. Azam, you have very nicely explained that there are different types of treatments available: Ayurvedic, homeopathy, allopathy, naturopathy, Tibetan, यूनानी, चाइनीज, और हर जो ट्रीटमेंट की जो विधि है, जो चिकित्सा विधि है, उसके अपने अपने गुण हैं, और हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से तरीके से और किस प्रकार से हम उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं. बेसिकली हमारे जो शरीर के अंदर जब बीमारी आती है तो पहले हमारे सोल के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर हमारा माइंड उसको आइडेंटिफाई करता है, और फिर हमारी बॉडी उस पेन को फील करती है. तो इन चीजों को पहचानने से इसके साथ साथ जब इसका इलाज शुरू होता है तो पहले क्लिनजिंग ऑफ बॉडी, दैट मीन्स बाउल क्लीनेस की बहुत इंपॉर्टेंस है. इसीलिए जब भी आपको सुबह प्रॉब्लम रहती है तो सारा दिन ही प्रॉब्लम रहती है. तो इसमें क्लिनजिंग का, शरीर की सफाई का बहुत अधिक महत्व है. वो हर विधि में है, चिकित्सक विधि में जिसमें भी आप जाएं उसमें उसका बहुत महत्व बताया गया है. साथ साथ आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि काजेज ऑफ हेल्थ क्या होते हैं, काजेज ऑफ बीमारी क्या है, किस कारण से आप बीमार हैं. उस चीज को हर व्यक्ति को, पेशेंट को और डॉक्टर को, चिकित्सक को उस चीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए. क्या वो लाइफस्टाइल की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से बीमारी है, या ईटिंग हैबिट्स खराब हैं, इन्वायरमेंट खराब है, इमोशंस का इम्बैलेंस है, स्लीप डिसऑर्डर है, रेस्ट प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, या पोस्चर. आजकल ऑफिस में भी एर्गोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि बैठने का एनवायरनमेंट और चेयर, कुर्सी, टेबल सबका प्रोपोर्शनेट होना चाहिए ताकि लोग स्वस्थ रह सकें और ठीक तरह से बैठकर कार्य कर सकें. उसके साथ साथ पूर रिलेशनशिप है जो फैमिली में है, वो भी एक स्ट्रेस का और बीमारी का एक कारण है. देन पोल्यूशन भी एक बीमारी का कारण है. जब तक इनमें से क्या बीमारी है उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसको किस प्रकार से हम ट्रीट करेंगे, ये एक बहुत आवश्यक अंग है चिकित्सा प्रणाली का. मुझे याद है डॉक्टर के अग्रवाल कहा करते थे जब हमारे यहाँ कोरोना का बहुत
प्रकोप था कि पहले एक्सेप्ट करें। जैसे ही आपको बीमारी आती है, खांसी, जुकाम, बुखार, कोई तकलीफ आती है, तो उसको आप एक्सेप्ट करें। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिनायल मोड में रहेंगे, तो तब तक आप बीमारी का इलाज भी नहीं करेंगे। और बहुत से लोग जो काफी सीरियस हुए, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, वो ऐसे ही लोग थे जो डिनायल मोड में रहे, जिन्होंने बीमारी को एक्सेप्ट नहीं किया। और जिन लोगों ने पहले ही आते ही बीमारी को, खांसी, जुकाम, बुखार को एक इजी ना लेकर के उसका इलाज शुरू किया, और पहले 4-5 दिन में अगर उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया, तो बिना किसी तकलीफ के ठीक हो गए। जिन लोगों ने 4-5 दिन बिता दिए और बाद में जो है वो सीवियर हो गए और उनके लंग्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ गया, तो उस समय उनकी रिकवरी में भी डिले हुई और मिसहैप्स भी हुई। तो ये बहुत जरूरी है कि हम डिनायल मोड में ना रह करके एक्सेप्ट करें, अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें। और हमारे मन में, जब तक पेशेंट के मन में ये भावना नहीं होती कि वो ठीक होना चाहता है, तब तक उसको कोई भी चिकित्सक, कोई भी डॉक्टर कुछ भी दे दे, ठीक होना मुश्किल है। आपको उचित व्यवस्था करनी चाहिए इलाज की, उचित डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जो भी प्रोसेस आप करते हैं, चाहे वो आप आयुर्वेद में जाएं, होम्योपैथी में जाएं, एलोपैथी में जाएं, जिस प्रोसेस को भी आप फॉलो कर रहे हैं उसमें ट्रस्ट करें। हैव फेथ इन द डॉक्टर, हैव फेथ इन द सिस्टम, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, और पार्टिसिपेट इन हीलिंग प्रोसेस। जो से आपको बताया जाता है उस प्रकार से उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और ताकि आपके जीवन में जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो आप कर सकें और आपकी रिकवरी फास्टर हो सके। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से डॉक्टर कबीर ने बताया कि सोल, माइंड और बॉडी बीमार होते हैं, उस प्रकार से मेरा जो इस आज के इस बात से मुझे लगा है कि उसकी रिकवरी उल्टी होती है। पहले शरीर रिकवर होगा, फिर मन रिकवर होगा, और फिर आत्मा रिकवर होगी, फिर सोल रिकवर होगी। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप किसी भी प्रोसेस में जाएं, उस प्रोसेस की जो भी विधियां बताई गई हैं, हर प्रोसेस की, हर ट्रीटमेंट की अपना तरीका होता है, अपनी दवा होती है, तो उसको फॉलो करें, उसमें फेथ करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। यही हमारे आज की इस चर्चा का विषय था, और यही आज की इस चर्चा का परिणाम है। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर आजम कबीर का कि उन्होंने हमारे इस सेशन को ज्वाइन करने का लिए समय निकाला। समय नहीं है डॉक्टरों के पास आजकल, लेकिन फिर भी हमारी रिक्वेस्ट को मानकर he made it possible, he made it convenient to join us. Thank you very much for the excellent session, और हम उम्मीद करते हैं कि आजम जी हमारे को इसी प्रकार से आने वाले सेशंस में जब भी हम समय मिलेगा हमारे को देते रहेंगे, और हमारे इस प्रणाली को और हमारे इस ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। चावला साहब, it was a very good session. थैंक यू कमल जी, थैंक यू। और चावला साहब, एक और बात, आप तो मास्टर हो गए खुद ही। नहीं, ऐसा नहीं है। Really, we have really become a master of everything, all the problems. तो इस प्रकार से हम अपने सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में हम अगले बुधवार को जो ये हमारा सेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे, और हमारे साथ नई फैकल्टी, नए डॉक्टर, नए विषय पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। एक्सीलेंट चावला साहब, एक्सीलेंट सेशन। और ये नववर्ष जो 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सब के लिए लाभकारी हो, हितकारी हो, स्वस्थवर्धक हो, आप और आपका परिवार सुखी रहे। नमस्कार। थैंक यू चावला जी, इट वाज एक्सीलेंट सेशन, ब्यूटीफुल। सपना लाइव बंद कर दो।